सबको नमस्कार। इन दिस वीडियो हम लोग सीखेंगे हाउ टू ऐड स्टॉक्स इन ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर फॉर फ्री। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल ओपन कीजिए और उस पर टाइप कीजिए सर्च बार पे ट्रेडिंग व्यू, और उसके बाद चार्ट पे क्लिक कीजिए एंड देन वेट फॉर अ मोमेंट। और उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पे 3 लाइन कॉर्नर पे क्लिक कीजिए, जो अभी मेरा माउस वहाँ पे है, और क्लिक करने के बाद आपको उधर पे साइन इन करना होगा आपका गूगल अकाउंट से, एंड देन आपका गूगल का अकाउंट को सेलेक्ट कीजिए, पासवर्ड डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए एंड देन वेट फॉर अ मोमेंट। So now you are signed in the TradingView software. So इस तरह से आप साइन इन कर सकते हैं। So I will click on that icon and what I will do is I will on the dark mode. So a dark mode is very necessary. अब मैं आपको स्टॉक्स ऐड करने का तरीका बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर TCS, आपको TCS डायरेक्टली टाइप करना होगा ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पे, और उसके बाद आप TCS को फर्स्ट NSE नोट द फ्यूचर ऑप्शन, वो फ्यूचर ऑप्शन है, उसको डिनाई कीजिए, लेकिन ऊपर का एट द लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक कीजिए और आपको रेड कलर का सिग्नल मिलेगा। आपका स्टॉक्स ऐड हो चुका है। एट द राइट हैंड साइड ऑफ द ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर वहाँ पे स्टॉक का लिस्ट है और आपका TCS हैज़ बीन एडेड इन दैट लिस्ट। एज यू कैन सी मेरा 500 स्टॉक्स ऑलरेडी ऐड है इस ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पे। सो यू हैव टू डू सम मेहनत, यू हैव टू ऐड द स्टॉक्स इन ट्रेडिंग व्यू इन योर अकाउंट। इस तरह से यू कैन ऐड द स्टॉक्स। एंड नाउ यू माइट बी थिंकिंग हाउ टू ऐड द स्टॉक्स, स्टॉक्स कैसे ऐड करेंगे? तो मैं आपको प्रोसीड्यूर बताऊंगा। गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए निफ्टी 500 स्टॉक लिस्ट। स्क्रॉल डाउन कीजिए और मनी वर्क्स फॉर मी वेबसाइट पे जाइए। As you can see now, these are all the Nifty 500 stock list. Scroll down कीजिए and you can go to the next page और continuously आप stocks को देख सकते हैं। So these are all the stocks that you can add in the TradingView software in your account. The best way is, in the other hand, you can open this website in your mobile, and on the other hand, you can type these stocks on your computer in TradingView. And the another way is, आप ये स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। इस तरह से आप दो गूगल क्रोम को ओपन कीजिए, इन द अदर हैंड मनी वर्क्स फॉर मी वेबसाइट को खोलिए, और दूसरा क्रोम पे आप ट्रेडिंग व्यू का साइट पे जाइए, and you can type all the stocks of Nifty 500. So it is done. In the next video, I will show you how to scan 44 MA stocks in TradingView software. It is very simple and easy. The best strategy from Siddharth sir. You can get a passive income from this strategy every month, that I guarantee. So thank you very much for watching my video. Please do like and subscribe my channel.